Let us have some more discussions on chemical kinetics. Study chemical kinetics too. And today we shall have an idea about what is meant by molecularity of a reaction and also the rate law. Molecularity और rate law के बारे में आज हमको समझना है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी या रेट लॉ को जानने से पहले ये बहुत ही जरूरी है कि हम एक थ्योरी है जिसको कि हम बोलते हैं कोलिजन थ्योरी. वी शुड नो व्हाट इज मेंट बाय कोलिजन थ्योरी. कोलिजन थ्योरी का एक केवल संक्षिप्त विवरण मैं आपको यहाँ पर दूंगा. उसके डिटेल्स तो बाद में किसी दूसरे वीडियो में या दूसरी टॉक्स में चर्चा करूंगा. Only a brief idea about the collision theory will be provided today. For example, why a chemical reaction takes place is explained in collision theory. We know that a reagent or a reactant has number of particles. It may be a molecule, ion, or even an atom. These particles in our study of chemical kinetics are usually termed as species. The species are not idle. ये species स्थिर नहीं रहते. ये reagent में खुद एक दूसरे से उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराते रहते हैं और इस टकराने को हम बोलते हैं कोलिजन. A number of collisions occur within a reagent and reagent species. These collisions may be quite high, their number may be large, but only a few collisions out of the total number of collisions, only a few number of collisions result into the formation of the product. And such a collision is known as fruitful collision. हमको ये जानना भी जरूरी है कि रेट लॉ को जानने के लिए उससे पहले हमको ये जानना जरूरी है that the concentration of the reacting substances, that is reagent, has got a direct relation with the rate of a reaction, or rate is directly proportional to the concentration. Therefore, we have to use a constant which is known as rate constant. And based upon this rate constant and the concentration term, there is a mathematical expression which is known as rate law. अब ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है और मॉलिक्यूलरिटी क्या है, कितने प्रकार की मॉलिक्यूलरिटी हो सकती है और रेट लॉ क्या है, और उसी के साथ ही साथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हम सीखेंगे. थोड़ा सा आइडिया लेंगे व्हाट इज मेंट बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो देखिए, हियर इज द टर्म मॉलिक्यूलरिटी. Molecularity of a reaction is the number of reacting species taking part in elementary reaction which collide continuously to form product. Elementary reaction क्या होता है, collision theory के बारे में अभी हमने चर्चा की है. तो किसी भी रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाते हैं, that gives you an idea about the molecularity. For example, a reaction is given here where nitric oxide, two molecules combine together with one molecule of oxygen to form two molecules of nitrogen peroxide. तो कितने molecules reactant के combine कर रहे हैं? 2 plus 1. 2 of nitric oxide, 1 of oxygen, and therefore the molecularity here is 3. अब इसके बाद molecularity unimolecular हो सकता है reaction, bimolecular हो सकता है, termolecular reaction हो सकता है. So what is unimolecular reaction, what is termolecular reaction, and what is bimolecular reaction, we shall take up shortly. But before this, let us have an idea about the rate law. Rate law is, जैसा कि मैंने बताया, एक एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन है rate of reaction को describe करने के लिए, mathematical expression. And suppose there is a reaction A plus B forming products. अब जैसा कि हमको मालूम है, कैपिटल लेटर A and कैपिटल लेटर B represent the reagents and these small letters A and B represent the stoichiometric coefficient. तो अब इसके लिए अगर रेट लॉ लिखना है तो हम किस प्रकार से लिखेंगे? रेट will be represented as K concentration of the reactant A
into concentration of reactant B. And of course, the concentration of reactant A is raised to power m, the exponent m, small letter m, and for B, the concentration term is raised to the coefficient small letter n. This m and n represent the order of the reaction, और ये experimentally हम determine करते हैं. It is not the same as A, usually. Can be same also under certain conditions through certain mechanism of reactions. But usually these are experimentally determined coefficient. प्रयोग करके एक्सपेरिमेंट करके हम ये निकालते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन के ऊपर क्या कोएफिशिएंट लगावें कि रेट आ जाए. So rate law is nothing but the mathematical expression to express the rate of a reaction using rate constant K. K is the rate constant. अब ये rate constant एक रिएक्शन के लिए हमेशा एक ही होता है. इसका कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं है. It doesn't depend upon the concentration terms. Concentration कुछ भी हो, ये m और n experimentally determined coefficient है. And of course, K depends upon the temperature. एक particular temperature पर K का वैल्यू एक ही होगा. टेम्परेचर बदल जाएगा, K का वैल्यू बदल जाएगा. M and N represent the order of the reaction. अब order of reaction क्या होता है, इसके बारे में तो हम आगे और अधिक पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है ये कोएफिशिएंट M है, इससे भी हमें order of reaction तुरंत पता लग जाता है. Order of reaction with respect to change in concentration of A, reagent A के concentration में जो परिवर्तन हो रहा है उसके आधार पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन m है. उसी प्रकार से रिएक्टेंट B के कंसंट्रेशन में जो परिवर्तन हो रहा है उसके आधार पर कंसंट्रेशन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n है. और m और n को अगर जोड़ दिया जाए दैट गिव्स द टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. तो ये तो एक शॉर्ट में चर्चा हुई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, जिसकी कि हम विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे. अब देखिए, there can be a unimolecular elementary reaction. हम इस रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, that is decomposition of ozone to form oxygen. अब ये दो elementary reaction से होता है. 2 steps are involved here and each step is known as elementary reaction. So this is unimolecular elementary reaction, even though it may involve a number of steps. So that is there. Similarly, there can be a single step unimolecular reaction. ऐसा भी होता है कि कभी कभी एक ही स्टेप में पूरा रिएक्शन हो जाए और बीच के कोई स्टेप इन्वॉल्व ही नहीं है. So that is itself a unimolecular reaction. Particularly in this case, as you find, this is cyclobutane. Cyclobutane decomposes to form ethene, and therefore rate with respect to average rate of reaction we can represent this way: delta C4H8 concentration divided by delta T. ये तो हम पढ़ चुके हैं, हमें मालूम है. This is always negative, and rate expression will be equal to K concentration of C4H8. Of course, it is a gaseous reaction. And then next there can be a bimolecular reaction where two molecules combine together to form a product, and these reagents may be of the same type or may be of different type. A plus B giving product, or two molecules of A forming products. Of course, these products would be different. The first type of reaction rate हम इस प्रकार से लिखते हैं: rate is equal to K concentration of A into concentration of B. Rate is equal to K concentration of A into concentration of A. You can consider two molecules as AA. So this will be equal to Ka square. And of course, the term which is raised to the concentration term are experimentally determined. अब कभी कभी सिंगल बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी स्ट्रेट वे होता है, डायरेक्ट. जैसे वन एग्जांपल इज द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2 plus CO. NO and CO2 are the products. Of course, this is a gas phase reaction, and here a number of steps may be involved, but this is example of a bimolecular elementary reaction. Similarly,
Intermolecular reactions may also be there. These are known as intermolecular elementary reaction. अगर 3 मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड हो एक ही समय में तो उसको हम ट्राई मॉलिक्यूलर नहीं बोलते. We call it as intermolecular elementary reaction. But intermolecular elementary reactions are uncommon because the probability of 3 particles colliding together simultaneously is less than 1,000th of the 2 particles colliding together. इस तरह से 3 पार्टिकल का एक साथ कोलिजन होना या टकरा जाना बहुत मुश्किल होता है, ये इम्प्रैक्टिकेबल होता है. और 3 से ज्यादा तो I can definitely say that this is impossible. 4, 5, 10 मॉलिक्यूल कंबाइन कोलाइड करके और कोई प्रोडक्ट बनावे एक ही समय में, ऐसा नहीं होता. बस it is possible that a unimolecular reaction may be are very common, bimolecular are also possible, and in rare cases we find that intermolecular elementary reactions are there. For example, this reaction, nitric oxide reacts with oxygen to form nitrogen peroxide. The rate is given by NO square raised to power 2, concentration of course, and oxygen raised to power 1. अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये stoichiometric coefficient यहाँ लिखा हुआ है. But whatever may be the situation, these coefficients which are represented in the rate law is always given experimentally determined, and of course K is here. So similarly here NO plus Cl2 forms 2NoCl. So rate is equal to K NO raised to power 2 concentration Cl2. अब ये यहाँ पर कोएफिशिएंट के बराबर ही लिखा है, लेकिन इसका खुद का एक मैकेनिज्म होता है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, और वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करके ही हम निकाल पाते हैं. और यहाँ पर भी देखिए K मिसिंग है. इट इज can be taken up for granted that K is there. Rate is equal to K concentration of NO raised to power 2 multiplied by concentration of oxygen, of course raised to power 1 तो हम लिखते ही नहीं, that's there. Okay, so I suppose you must have got an idea about the molecularity of a reaction and also the rate law. This molecularity of reaction, collision theory, rate law, and mechanism of reaction and order of reaction plays a vital role in our studies in chemical kinetics. इसके बारे में और ज़्यादा हम अब आगे चर्चा करेंगे. Thank you. Please go through it. I suppose you will feel convenient to get into the topic kinetics of chemical reaction. Thank you.